Welcome to the glimpse of price action at AISM. Kindly follow the session rules and reach out to us on our help desk to get further support. Now, before we begin, I would like to mention a quote from Sir Joey Vidich, which goes like, "Limit your size in any position so that fear does not become the prevailing instinct guiding your judgment." With that being said, let's have a look on our topics. So we are going to cover support and resistance today, and we will learn about the different formations and the variations of the same. This will ultimately help you in mastering the price action in your trading journey. So let's begin. Support and resistance are highly discussed attributes of the technical analysis. These terms are used by traders to refer to a price level on a chart that tends to act as a barrier, preventing the price of an asset from getting pushed in a certain direction. ट्रेडिंग की दुनिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र हमेशा से ही रहा है। ये उन प्राइस लेवल्स को दर्शाते हैं जहां से कीमतें किसी एक दिशा की तरफ मुड़ने की संभावनाएं रखती हैं। आज हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में विस्तार में जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरह इसके अलग अलग वेरिएशंस और फॉर्मेशंस आपकी ट्रेडिंग जर्नी में प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। Support is a price level where a downtrend can be expected to pause due to a concentration of demand or buying interest. This is also called as floor. So the prices from support level are supposed to go high. On the other hand, resistance is a price level where an uptrend can be expected to pause due to a concentration of supply or selling interest. This is also called as ceiling. Hence, the prices from resistance level are supposed to go down. Now imagine support and resistance as your floor and ceiling in the house. Consider a rubber ball as price, and when you throw that ball on floor with some force, it will bounce back from the floor and will go and touch the ceiling. It will not cross the ceiling as there is a concrete which is stopping that ball to pass that ceiling level. Just like that, a resistance will not let the price क्रॉसिंग दैट लेवल बिकॉज ऑफ सम कॉन्क्रीट रीजंस। सपोर्ट उस प्राइस लेवल को दर्शाता है जहां से डाउन ट्रेंड के खत्म होने की संभावनाएं हैं। सपोर्ट लेवल पर कीमतों में बढ़ोतरी और उछाल की संभावनाएं रखी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल्स होते हैं जहां से अप ट्रेंड के खत्म होने की संभावनाएं होती हैं और इस लेवल पर कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। And now let's understand the types of support and resistance. Although there is no such classification, but to make things easier for you, we have classified into 5 major categories: the demand and supply zones, the psychological levels, trend lines, dynamic levels, and the previous high and low. Let's begin with demand and supply zones. Now, as we have understood, the area or zone where the price took support is called demand zone, whereas the area or zone where the price takes a resistance is called a supply zone. जिस प्राइस लेवल से कीमतें निरंतर बढ़ना शुरू होती है उसे हम डिमांड जोन कहेंगे, और जिस प्राइस लेवल से कीमतें निरंतर गिरना शुरू होती है उसे हम सप्लाई जोन कहेंगे। Let's understand this with a practical example. Take a blank chart of any instrument. I'm taking an example of Bank Nifty chart here. Now identify all the recent swings in the price movement. Swings are the areas where the price is reversed. As you can see on the chart, we have marked the areas with an inverted V curve where the price is getting rejected, and the areas marked with V curve where the price is taking support and going up. Now draw the horizontal lines on these swing levels. And the final step is to draw a rectangular zone between the horizontal lines. As you can see, a zone has been formed between these swing levels, and the price is moving beautifully between the demand and the supply zone. These zones are giving us the support and resistance levels in the markets. And now let's have a look on the psychological levels. Movements of prices in the markets is a good representation of our human behavior. Following the same, prices often create some certain levels, especially on the round figures. बाजार में कीमतों पर हो रही हलचल मानव व्यवहार को दर्शाती है, और इसी वजह से हमें कीमतों में भी
विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक स्तर देखने को मिलते हैं। इन्हीं स्तरों पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अनुभूति की जा सकती है। अधिकतर साइकोलॉजिकल लेवल आपको राउंड फिगर पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए जिंदल स्टील के इस चार्ट पर आप 600 रुपये की प्राइस के लेवल को लीजिए, जहां से प्राइस ने एक रिजेक्शन लेते हुए रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है। एंड द सेम गोज विद द इंडेक्स वैल्यूज एज वेल। As you can see, the price jumped back after touching 17,000 level, forming a psychological support level at this price point. So these are the ways to find out support and resistance level based on the psychological factors and the round figures as well. Now let's move on to our next topic on the trend lines. While marking swing highs or lows, we can form trend lines, and these continuous swings can help us forming better trend lines. Let's understand this with a practical example on the chart. Take a blank chart of any instrument. Here we are using Bank Nifty chart, and now mark at least 2 swing highs or lows. The line we formed taking higher highs has acted as resistance here, and the line with lower lows has acted as support over here. Drawing the same, we formed support trend line and the resistance trend line. And this is how trendline support and resistance work. And now let's look at the dynamic levels. Dynamic levels keep on changing along with the price movement and acts as a good support and resistance. In the previous 3 types, we have seen support and resistance at a fixed price point, but here it keeps on changing with the price movement. A good example of dynamic levels is moving averages. Different values in moving averages can act as a curical support and resistance level. Dynamic levels प्राइस की मूवमेंट के साथ बदलते रहते हैं। ये लेवल किसी एक फिक्स प्राइस पॉइंट पर आकर नहीं बनते, लेकिन फिर भी अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भूमिका निभा सकते हैं। चार्ट की मदद से इसे और बेहतर समझते हैं। यहाँ दिखाई देने वाली ब्लू लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। And same goes with the 50 EMA as well, which acts like a good resistance. You can witness the price touching 50 EMA and going down multiple times while taking rejection, and here the 50 EMA becomes a good resistance. So this is how the dynamic levels work in the markets, and additional indicators like 21, 50 and 200 EMA can help you understanding it more better in the live markets. Now let's move on to the previous day high and low. So many traders consider previous day high and low as their current support and resistance levels. Hence, we should keep these levels in our mind before taking any trades in the market. As you can see on this chart, the high of 17th May has acted as a resistance of 18th May, and the low of 17th May has acted as the support of 18th May. जब अधिक मात्रा में ट्रेडर्स पिछले दिन की हाई और लो को अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मानकर अगले दिन के ट्रेड्स प्लान करते हैं, तो ऐसे में हमारा भी अवगत रहना ज़रूरी हो जाता है। इसी के चलते आप प्रीवियस डे के हाई को अपना करंट रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे के लो को अपना करंट सपोर्ट लेवल मानकर अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान आप अपने निर्णय बेहतर करने के लिए आज बताई गई सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की सहायता ले सकते हैं। सपोर्ट लेवल की तरह ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी बढ़ोतरी हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे अगले सेशन में मिलने की कामना करता हूँ।